Now the next class, that's the chondrichthyes and the osteichthyes. These two classes belongs to which superclass? Pisces. Which one? Pisces. These two classes belong to which division? Which one? Gnathostomata. Right. Next, lamprey belongs to which division? Agnatha. Isn't it? Hagfish belong to which division? Petromyzon. Isn't it? Right. SAB questions are Petromyzon, cyclostomata. Isn't it? Right. So this type of question may ask in your exam. Clear? चलिए, first एनिमल किंगडम, क्लास कॉन्ट्रिक्टिस एंड द ऑस्टिक्टिस, डिफरेंस इसके फॉर्म में हम फर्स्ट लर्न करेंगे. राइट. फर्स्ट वन, देयर हैबिटेट. हैबिटेट मीनिंग द प्लेस वेयर दे लिव. Here in case of chondrichthyes, generally majority members are marine. One of the freshwater Accipenser fish का नेम है. क्या है? Accipenser. क्या है? Accipenser. Osteichthyes, marine and freshwater both are present. So first habitat में difference कहाँ पे आया? Chondrichthyes marine, chondrichthyes osteichthyes marine and freshwater. Clear? Next one, endoskeleton in case of chondrichthyes cartilaginous, whereas osteichthyes bony. osteichthyes में कैसा है? Bony. Location of mouth ventrally, and here which one? Terminal. Now mouth ventrally meaning what? देखो ये लोअर सरफेस एंड द अपर सरफेस ज्वाइन हो रहा है, तो एग्जैक्टली टर्मिनल एंड पे दिखाई दे रहा है इसका माउथ आपको. यस और नो? दिस इफ माउथ, अब से आगे कभी भी आप फिश देखो, राइट, एंड इन दैट फिश शी ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ माउथ. अगर माउथ टर्मिनल है तो वो कौन से टाइप का फिश है? Osteichthyes. Which one? Osteichthyes. And other, can you make out this mouth not at the terminal? This is upper, right, dorsal. This is which one? Ventral. तो ventral पे यहाँ पे mouth है. Mouth is located ventrally lower side, right? So जितनी भी fish है in that you observe that the mouth located ventrally, right? Shark, one of them, right? So that is the example of which category? Chondrichthyes. And terminal है, that is osteichthyes. Understood this? Next one, pairs of gills. In case of chondrichthyes, how many? 5 to 7. 5 to 7 gills are there without operculum. Operculum meaning what? Covering. Operculum का meaning क्या होता है? Covering, right? So in that, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर? Yes or no? Right? Inside that gills are there. Gills है, उसके ऊपर एक covering structure है. क्या है? Covering structure. So this covering structure we call what? Operculum. This one we call what? Operculum. देखो यहाँ पे gills है, right? Gills are covered by externally one membrane. That structure we call operculum. So in case of chondrichthyes, operculum absent. In case of osteichthyes, this operculum is present, and the number of this that's the gills, that is 4 pairs. यहाँ पे mention किया है pair. 5 to 7 pairs, 4 pairs. Clear? किसी में 6 to 15 pairs भी था ना? Cyclostomata. Which one? Cyclostomata. Right? So if mention Melanoglossus. Melanoglossus is an example of hemichordates. Which one? Hemichordates. Right? Next one. If mentioned that Petromyzon has 5 to 7 pairs of gills. False. 5 to 7 I am meaning what? Chondrichthyes. Petromyzon belongs to which one? So matching. Clear? So pair of gills 5 to 7 without covering would directly expose करते to the that's the external environment, right? So gills are there, but gills are not covered by a membrane. Membrane we call operculum. So if operculum present, in case of which one?
Ostrich phase, right? If present, ostrich. If absent, contract phase. If 4 pairs of gills with operculum, then if 5 to 7 pairs of gills without operculum, contract phase. Next one, that is types of scales. Have you ever seen the scales present on fish? Yes or no? ऐसा कोई एक कैटेगरी आएगा ना जिसमें स्केल्स आर एब्सेंट, डिवॉइड ऑफ स्केल्स? साइक्लोस्टोमेटा, राइट? बट इन केस ऑफ फिश स्केल्स आर प्रेजेंट. ये पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस थिंग? Yes or no? These are what? Scales, right? Now, scales are of different type, right? One type in that, can you make out this shape? Is there like pointed tooth like? Yes or no? Right? This shape we call, अगर ये shape के scales है, this one we call placoid scales. ये shape का name क्या है? Placoid. Which one? हर एक fish के ऊपर same type of scales are not there, right? वो 4 types होते हैं. One of them is a which one? Placoid. Which one? Placoid, right? Now ये little bit circular जैसे है, right? So this one we call cycloid. Which one? Cycloid. Which one? Cycloid. We repeat. Which one? Cycloid. ये भी इसी का ही है. And this light square के जैसे जा रहे हैं, that is the which one? Ganoid. Which one? Ganoid. Repeat. Ganoid. So one thing here, that's the which one? Placoid. Here cycloid, ganoid, and wait. This one is a tenoid. Which one? Tenoid. Which one? Tenoid. So pointed वाले जो है वो कॉन्ट्रिक्ट किसमें है? Yes or no? बाकी जस्ट सर्कल है या लाइक दिस टाइप ऑफ शेप, वो किस में चले गए? ऑस्ट्रिच फेस, राइट? सो पॉइंटेड, दैट इज द विच वन? प्लेकोइड. टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड, टीथ लाइक. बेसिकली विच वन? टीथ लाइक. दिस मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स which are backwardly directed, meaning backwardly, suppose ये fish का body है, यहाँ पे वो pointed structure है, looks like this, right? वैसे one by one so many that scales are present on their body. Clear? So placoid scales are there, placoid cell in that pointed structure, teeth-like, and that directed on which side? That location, orientation on which side? Backward. Pointed जो end है, not towards the mouth, that is towards the tail, right? Next, here in case of that, यहाँ पे कोई tail, that's a tooth-like structure नहीं, only that shapes are there. This one either cycloid, ganoid, or the which one? Tenoid, right? Next one, heart. Fish में कितने chamber का heart होता है? 2 chamber. Fishes have 2 chambered heart, right? Fishes have 2 chambered heart. Upper chamber we call auricle, and the lower chamber we call ventricle. Upper chamber we call lower, upper. Auricle के अलावा other name atrium. Atrium singular है तो we call atrium, right? Now here from the body parts, remember, from the body parts blood first enter into the atrium, right? Body parts means body cells. From that, what kind of blood that comes? Deoxygen. ये याद है 10th का concept आपको, right? So in that deoxygenated blood that enters into which one? Right auricle, means sorry, not right. Here saying that's we call auricle. From this auricle, blood enters to ventricle. Now here deoxygenated blood. Here also which one? Deoxygenated blood. But now with the help of this pumping, right, pressurized type of blood, that first enter into gills, right, that move towards the which one? Because gills helps in what? Respiration, gaseous exchange. So now it move towards the gills. Gills में जाके वहाँ पे gaseous exchange होगा. So now the blood become, and that oxygenated blood reach to body parts. Right? इसमें ये circulation है. Clear? The single circulation present in case of fishes. So fishes starts with the which one? Heart is 2 chamber. One, other. Auricle receives what kind of blood? From where?
Yes. Next, then from the that's the atrium, blood enters to what kind of blood? And from the ventricle, blood pass towards for what? Respiration, gaseous exchange. And gills से कहाँ पे आएगा? Body vessels. Because now the blood becomes oxygenated. Clear? Sure. Now, next one. Here, this feature same in case of chondrichthyes as well as osteichthyes. Species में two chamber heart होता है. In short. Next, poikilothum or homeothum. Understand these two new words. Have you ever heard about this first of all? क्या पता है? हाँ, poikilotherms, another name cold-blooded. Homeotherms, another name warm-blooded. Poikilotherms cold-blooded है and homeotherms are which one? Warm-blooded, right? चलिए first हम हमारा example लेंगे, right? We are homeotherms. We are homeotherms meaning warm-blooded. Why we say? How can we say that? What is the difference between them, poikilotherm and homeotherm? Our constant body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहीट में कंसिडर करो तो 98.5. थर्मोमीटर में फ़ारेनहीट होता है ना, तब फीवर चेक करते हो, यस और नो? सो 100 आ जाए, 101 आ जाए तो फीवर है, दैट वी कंसिडर, इजंट इट? सो 37 सेल्सियस में एंड 98.5 डिग्री फॉर फ़ारेनहीट. दिस इज अवर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. या विंटर में हमारा टेम्परेचर 20 हो जाएगा, समर में हमारा 50, कांस्टेंट, इजंट इट? सो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. आप सिंपल एक चीज बताइए मुझे, किसी भी चीज में, राइट? अभी आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हो इन दैट कि अगर आपका एक बार 30 आ गया और नेक्स्ट टाइम भी आपको 30, नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी 30 लाना है ना? कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. सो फॉर दैट यू एक्सपेंड मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, और चल रहा है ना? We are homeotherms, warm-blooded, most advanced, developed one, right? For that, our body expends the maximum energy to maintain constant body temperature. Compared to this, poikilothers. Poikilothers are cold-blooded. Meaning what? Suppose outside that इनका body temperature है standard, that is hypothetically 37, उनका भी मान, right? But 37 की जगह पे outside body temperature, suppose that's a 42 degree or 43 degree, they change their body temperature according to the environment. They change themselves. समझ में आ रहा है? अगर लो हो रहा है तो लो करेंगे, हाई हो रहा है तो हाई, बट वो भी एक लिमिट होता है, राइट? अप टू सर्टेन लिमिट दे कैन डू दिस थिंग. बहुत ही ज्यादा वास्ट डिफरेंस में नहीं. क्लियर? कि सीधा 37 था और उससे 2 डिग्री हो गया, वैसा नहीं. Understood this? So poikilotherms meaning cold-blooded. Simple meaning they cannot maintain their constant body temperature. They change their body temperature according to the external condition. Clear? Whereas opposite word क्या आएगा अभी आगे? Homeotherm. Homeotherm meaning warm-blooded. Warm-blooded, they can maintain constant body temperature. They expend much more energy for that, and constant body temperature with irrespective of which one? External conditions. Clear? Next, so both fishes, both are what? Poikilotherm. ये देखो इसके common features हुए, two chambered heart, and other is a which one? Poikilotherms, cold-blooded. Clear? This two feature. Now next one, air bladder or the swim bladder, right? अगर आपने घर पे नहीं, एक्वेरियम में या फिर लाइव कहीं पे फिशेस ऑब्जर्व की है तो कभी फिशेस में ये चेंजेस थे कि दैट सम ऑफ द फिशेस आर देयर, राइट, दैट कैन continuously shows the movement down upward and some are there this constant, yes or no? ऐसे movements देखें, continuous वो upward downward नहीं करते, right? They can go downward, they can stay for some time and then come upward. तो ऐसा difference क्यों? So on that, some of the fishes, particularly chondrichthyes, do not have one structure that we call the which one? Air bladder or swim bladder, right? Air bladder, you know bladder? We also have bladder. Which bladder? Urinary bladder. So fills with urine. Air bladder fills with air. Air provides air है
राइट, दिस एयर इज देयर, प्रोवाइड buoyancy एज वेल एज वहां से भी उनको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन. सो वो कंटिन्यूअस सप्लाई होना, राइट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दैट ऑक्सीजन, दैट्स फ्रॉम दिस एयर ऑल्सो, राइट. फिर जैसे जैसे उसमें एयर कम होता है, दिस फिश कम अपवर्ड. क्लियर. दिस वन मेनली प्रोवाइड व्हाट, buoyancy. So those fishes do not have that swim bladder. They have to swim continuously, right? They have to swim continuously. But those fishes have that swim bladder or air bladder. They can regulate the buoyancy. They can, so means continuous buoyancy is not there. In that it can remain stable for some time at the downward also. Then again come back. Clear? So this is the, see over here, can you make out here swim bladder? Yes or no? बोलिए. Clear है? कोई doubt? And swim bladder का यहाँ पे that's the gills के साथ एक connection आएगा. Right? Now the next one, next point, claspers. Which one is given? Claspers, right? Clasper, first of all, that is present in which fins? Pelvic. Two terms are there. One is a pectoral. Which one? Pectoral. Shoulder, our which one? Pectoral. Hip, that is our pelvic part. Which one? Pelvic. तो fish है, right? Fish in that, जहाँ पे mouth है. Suppose over here the fish, right? Now towards the mouth यहाँ पे जो fins है, that we call pectoral fins. Which one? Pectoral fins, right? वो ये ऊपर से जो दिखता है ना, एक्चुअली फिश ऐसा होता है. यस और नो? तो ये एग्जैक्ट ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड, ऐसे पेक्टोरल फिन जो डायरेक्टली ऊपर होता है, एक तो उसको बोलते हैं डॉर्सल फिन भी उसमें होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स आर देयर, बट वन ऑन दिस, वन ऑन ओवर हियर, दिस आर द विच वन? पेक्टोरल. जैसे हमारे दो लिम्स है, उसके पास वो क्या है? फिन्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज अ विच वन? पेल्विक फिन्स. तो पेक्टोरल आगे के साइड पे, तो पीछे क्या है? पेल्विक फिन्स. विच वन? पेल्विक फिन्स. क्लियर. सो पेल्विक फिन्स, पहले पेल्विक फिन्स का लोकेशन क्लियर हुआ? यस और नो? नाउ सी pelvic fins, can you make out this two structure over here, right? These structures we call claspers. This one we call what? Claspers. इसको क्या बोलेंगे? Claspers. And present only and only in case of male. This is the female fish, this one is a male one. यहाँ पे वो clasper absent है. This claspers present in male fish which helps to transfer their gametes into female reproductive system, right? So during copulation, these claspers are held. Claspers are located in pelvic or pectoral region. Pelvic. In males or females? Males. Understood this line? So chondrichthyes on that, on pelvic, that's a near the, that's present on the pelvic fins, that's a claspers. इसको हम pelvic claspers भी बोलते हैं sometimes in case of males. And this thing is absent in case of osteichthyes. Here different mechanism is there. Clear? Next, oh, fertilization. Which one? Internal, external? आप logic लगा सकते हो? Yes or no? क्यों internal fertility? Because claspers are there. That claspers helps to deposit their sperms into female. Right? The sperms enter into female reproductive system. तो fertilization कहाँ पे होगा? Into female. Internal. Understood? And male and female जब मैं words use कर रही हूँ, तो dioecious हुआ या monoecious? Right? यही point आप अगर learn कर गए कि chondrichthyes, males possess this pelvic, that's a which one? Claspers, right? Females does not. तो meaning यहाँ से ही वो clarity है, male females are separated, dioecious है. Fertilization भी क्या होगा फिर? Internal. Link this logically. Clear? Now here this thing is absent in case of osteichthyes. Claspers are absent here because the males and female gametes are released into the water. So what kind of fertilization? External, right? Now again, as I say, male and female release their gametes.
है ना? सो डायोशियस हुआ या मोनोशियस? डायोशियस. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ओवीपेरस है या विवीपेरस? नाउ यू नो ओवीपेरस, यस, एग लेइंग, है ना? विवीपेरस पता है? वी आर विवीपेरस directly, right? See, in case of human, females also produce that ovum, egg, fertilization occur inside the body, and then zygote to embryo, and directly young one is deliver outside or larva? Young one deliver outside, yes or no? So if, right, internal fertilization and the young ones release outside directly, we call the which one? Viviparous, right? That is which one? Viviparous. So most of the chondrichthyes are which one? Viviparous. Which one? Viviparous. And osteichthyes जो है mostly oviparous है and shows direct development. Clear? Next one. Two chambered heart, already ये repeat हो रहा है, one auricle and one ventricle. Next, notochord होगा कि नहीं होगा? And persistent throughout their life. इसमें notochord कैसा होगा? Cartilaginous. And osteichthyes में bony. Cyclostomes में cartilaginous. Isn't it? Cyclostomes also have which one? Cartilaginous. Understood? So fishes के लिए हमें ये points learn करने हैं, examples बाकी है, right? पहले points clear. चलिए, first differences between chondrichthyes and osteichthyes. Habitat, one member acipenser, that is fresh water. Osteichthyes, endoskeleton, थोड़ा recall. Yes. Chondrichthyes, cartilaginous. Osteichthyes, bony. How many pairs of gills? Yes, and here this is chondrict, this is osteich. Right? Now, next one, chondrichthyes. In that, how many chambered heart? Two. This one, oviparous, viviparous, both. Chondrict, many are viviparous. Here, oviparous. Next one, which one possess clasper? Chondrichthyes, right? Chondrichthyes possess clasper, osteichthyes absent, right? Clasper in case of females or males? Males, right? Next one, operculum present in case of osteichthyes, right? How many pairs of gills? Here. Next one, that swim bladder present in case of which one? Osteichthyes, right? And that provides what? Buoyancy. Which one is the poikiothum? Both. Fishes are poikiothum. Poikiothum, another term? Meaning of poikiothum? Other term, meaning. They can't maintain their constant body temperature. Body temperature, right? They change their body temperature irrespective of बोलिए, clear है? Location of mouth or in case of osteichthyes, osteich बोला, osteich terminal exit, but थोड़ा सा नीचे ventral पे है तो chondrichthyes. Clear है? Right? Scales are of which one? Placoid. Here cycloid, ctenoid, right? बोलिए, और कुछ बाकी रहा? अब वो बाकी है. चलिए, यहां तक पहले क्लियर, राइट? गर्ग बोलो. एग्जाम्पल्स में फर्स्ट वन कौन है? ये शार्क. लोकेशन ऑफ माउथ, ये स्लिट दिख रहा है, राइट? ओवर हियर. सो दिस वन, लोकेशन ऑफ माउथ वेंट्रली. नाउ ये इट्स लुक लाइक अ सो, अगर आपने देखा है प्रिस्टिस, दैट इज द सीसो नहीं, सो इट्स, हाँ तो ठीक है, right? So over here, this is the C. On ventral side, the mouth is there. Belongs to which one? Chondrichthyes, right? Suppose आपको ये दे question में, right? Identify this organism, और identify भी नहीं करना है, that the given features, right? Which of the following given features belong to the given diagram, right? So remember, आपको सिर्फ ये पोजीशन से पता चल जाता है कॉन्ड्रिक है या ऑस्टिक. समझ में आ रहा है? Yes or no? Or you have to match the features with that, right? So first
Chondrichthyes में आया, that is the shark. Second is the which one? Sophis. Which one? Sophis, जिसको बोलते हैं प्रिस्टिस. क्या है नेम? रिपीट रिपीट. चलिए थर्ड वन, ग्रेट व्हाइट शार्क. राइट, विच वन? ग्रेट व्हाइट शार्क. ओके, नेम गिवन? कैरकेरोडॉन. विच वन? कैरकेरोडॉन. डॉन याद रखना, आगे भी एक डॉन आया था. एंटीडॉन. एंटीडॉन इज लिली, सी लिली. विच वन? सी लिली, है ना. दिस इज विच डॉन? कैरकेरोडॉन. कैरकेरोडॉन इज अ, अभी आगे और एक डॉन आने वाला है, व्हाइट ग्रे, है ना, शार्क. चलेगा, इतना बोला. राइट, चलिए नेक्स्ट वन. दैट्स द टू मेन rays are there. See, one electric organ, this is the torpedo, and this one is the trigon. Trigon, and this one is a torpedo. Right? Torpedo has which organs? Electric organs. Right? It has electric organs. It generates that electric currents. Right? In water bodies. Right? As a defense. As a which one? Defense. Right? And the next one over here, this is the poisonous sting. Right? Which one? Poisonous sting. By the way, poison and venom both are different. समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस हो सकता है? ये venom नहीं रिलीज करता, poisonous है. बोलिए. हाँ, venom जो होता है ना, वो डायरेक्टली इंजेक्ट होता है. राइट, डायरेक्टली इंजेक्ट. स्नेक बाइट करता है ना, यस और नो, या हम जहाँ पे सराउंडिंग में रिलीज करता है, क्या करता है? हाँ. सो जब डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाए ना, तब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेनम. राइट, सुना ही होगा, लाइक किसी ने पॉइजन लिया तो क्या डायरेक्टली इंजेक्ट, जनरली दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में फंस जाता है वो इंजेक्शन, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. राइट, अदरवाइज द विच वन? फर्स्ट रैट के लिए यूज करते हैं, यस और नो. तो रैट को पकड़ के इंजेक्ट करते हैं? नहीं. राइट, वो रैट के जो होते हैं वो जहाँ पे अवेबिलिटी है वहां पे उसका जो पता है ना, वो आता है रैट पॉइजन करके ना, अदर थिंग्स दैट कीप इट ओवर देयर. राइट, रैट जब उसको क्या करता है? डाइजेस्ट, तब वो पॉइजनस इफेक्ट देता है. अंडरस्टूड? सो वन माइनर thin line between that's the which one? Poison and venom. Right? So this one is a which one? Poisonous stingray. This is the stingray. This is the electrical organs containing electric rays. Trigon, and this one is a torpedo. Trigon जो है तो यहाँ पे एक spine जैसा structure होता है. क्या होता है? Spine like structure, and वहां से वो क्या रिलीज करता है? Poison. Generally this ऐसा मानते हैं कि trigons are very docile. Docile meaning what? Polite, right? Humble in nature. जब भी अगर बाई चांस ये बॉटम dwelling है, राइट, अगर वहां पे जनरल बॉटम dwelling इन अ विद सेंस लाइक दैट द सी शोर के पास भी वो बॉटम ही रहेगा, राइट, ओवर हियर. सो अगर वहां पे अगर वो रह जाता है और सब बाई सैंड के जैसा ही कलर है, देखो, है ना, और हमारा पैर लग गया, तब जाके वो एक्टिवेट होता है. जनरली वो ऐसा नहीं कि कहीं पे ह्यूमन दिखा तो रिलीज कर दो. नो, दैट इज नॉट दैट नेचर. राइट, वेरी डोसाइल इन नेचर. अंडरस्टूड दिस? बोलिए. क्लियर? गर्ग, स्टार्ट. ऑस्टिक्टिस एग्जांपल्स. फर्स्ट, मराइन में भी है, फ्रेश वाटर में भी है, एंड सर्टेन एक्वेरियम में भी हम यूज करते हैं. राइट, सो मराइन में है फर्स्ट दिस वन, एक्सोसिटस. विच वन? देखो, फ्लाई विंग्स के जो स्ट्रक्चर है उसके फिन्स वैसे है, राइट. सो दिस वन वी कॉल फ्लाइंग फिश. विच वन? Flying fish. Another name? Repeat. Next, this one, hippocampus seahorse. हिप्पोकैम्पस हमारे एक ब्रेन का पार्ट भी है जिसका नेम है, हियर द एनिमल नेम हिप्पोकैम्पस सीहॉर्स. विच वन? सीहॉर्स. नेक्स्ट वन फ्रेश वाटर के लिए है. फर्स्ट इन दैट लेबियो, कॉमन नेम रोहू, कटला, कैटला, क्लैरियस, मगुर. चलिए बोलिए. लेबियो, कटला, कैटला, क्लैरियस, मगुर. दिस इज कटला फिश, labio this one, and this one that is the magur, clarius.
राइट, बोलिए क्लियर है. सो क्लैरियस मगुर, लेबियो रोहू, राइट, एंड द वन इज अ विच वन, दैट इज द कटला. विच वन? नहीं नहीं, डिफरेंस है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वन एक्वेरियम के लिए, दैट इज विच वन? बेटा, है ना. बेटा, दैट इज द फाइटिंग फिश. दिस इज द बेटा फाइटिंग फिश, राइट. बेटा विच वन? फाइटिंग फिश. नेक्स्ट वन टेरोफाइलम. विच वन? विच वन? Pterophyllum angelfish. This one is a which one? Angelfish. This one is a angelfish. बोलिए क्लियर. सो टेरोफाइलम, एंजलफिश, एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, राइट. फ्लाइंग फिश विच वन? एक्सोसिटस. फ्रेश वाटर मराइन. अंडरस्टूड. बोलो.